Assume like this one is the case, and we are having a list of numbers 9, 1, 3, 12, and 4. Okay, and suppose the number to be searched is stored in this n. So the list will the algorithm will behave differently depend on the input. अच्छा, दो तरह की हम complexity को define करें, then the complexity can be static or dynamic. तो static complexity तो वो होगी जिसमें complexity doesn't dependent on the input value. Okay, कुछ भी input हो उसका, but उसकी complexity fixed होगी. It can be in the terms of constant value. And the other type is dynamic. Dynamic means the complexity depends on the input. Like if we are talking about this case, if the value of n is equal 1, so in that case जब नंबर इसमें सर्च होगा तो we will start from the first position and number will be found at the first position. So total number of comparisons, suppose I am denoting it by using C, then it will be 1, and total number of elements in the list are 5, or we can say the length of the list are 5. Suppose we are denoting it equal to L, it is 5. So if the number is present at the 0th index, then the total number of comparison equal to 1. So the complexity will be O of 1. And assume the number to be searched is 4. Then we will start comparing from the first position, first with 9, 1, 3, 12, and 4. So we will get 4 at the 4th index value or after the 5th comparison. So in this will be the worst case. Or suppose the number is not present here and we assume we are searching for 7. So 7 is not here. So total number of comparisons, again total number of elements in the list, that is 5. So complexity हम इस लिस्ट को लेके चलें तो it will be 5. Okay, total number of comparison equal 5, so complexity will be O of 5. Next thing is this, suppose the number we want to search is 3. So any value which we are searching for is in between the best case, means after the first location or before the last location. ये 3 लोकेशन जो हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे वो वैल्यू है जो हमको सर्च, जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं, देन दैट विल कम्स अंडर द एवरेज केस. ओके, तो 3 केसेस हो गए, बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया. So for 3 these cases, there must be some type of notation that can be used to define those cases differently. Okay, so worst case we can say means the upper bound on the execution time. It is best case, define the lower bound on the execution time, means minimum time requirement for executing the algorithm. It is maximum time, it is minimum, it is maximum. और इनके बीच में जो होगा वो आ जाएगा एवरेज, जो मिन और मैक्स के बीच में है दैट इज द एवरेज. ओके, सो if we want to denote the upper bound or the maximum time requirement for the execution of a particular algorithm, then that will be denoted by big O notation, this one. now हम एक एक करके देखेंगे इनको क्या यूजेज है और कैसे हम इसको डिनोट करेंगे. and the minimum time requirement, okay, that is denoted by omega notation. Okay, and the average time requirements are denoted by the theta notation because that comes in between the min and max requirement of the timing. Okay, so ये basic था. I'm just explaining you what is the what can be 3 cases and why this asymptotic notations are required for the different cases to denote the time complexity of the algorithm. Okay, so I think you people have understood what is the basic meaning of the 3 cases of the time complexity of algorithm. So अब now the time come, what does this mean? आपसे मैंने बताया था O, big O notation, it defines the max time requirement. So if it is defining max time requirement, then it is the upper bound O of n. It is also the upper bound. It is also the upper bound. And let's suppose I am denoting it like this, omega notation, and it is the best case time requirement or the lower bound. And if I want to denote the average case requirement, then I will use theta, and it will be like suppose this, theta of n, means average time. It is the average case or average running time requirement for that particular algorithm. Okay,
So अब इनको हम क्या करते हैं, first task is to define this notation more formally and completely separately. Okay, so starting from this, so asymptotic notations are the mathematical notations. These are used to describe the running time of an algorithm when the input tend toward a particular value or a limiting value. So normally if we are talking about the worst case, then we will normally we are, whenever we are doing the comparison of the algorithm, more than one algorithm, then we normally focus on the worst case time complexity, because minimum कोई भी algorithm कितना minimum time ले रही है, that doesn't matter. Okay, we will just check कितना maximum time consumption है. So in that terms we will simply compare those algorithm कि हाँ इनमें से better कौन सी होगी, इतना time consumption है इसका. And for the worst case, the input is assumed very very large. Okay, तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था the different three cases for a particular algorithm. Okay, so let's suppose we are having a bubble sort, and if the array is already sorted, then that will be the best case. If the array is in the reverse condition, then that will be the worst case. तो यहाँ तो minimum time minimum work होगा, इसमें maximum work होगा. And when the input array is neither sorted or nor in reverse order, then it takes average time. It will come in between the best case or the worst case. Okay, so these durations are denoted using the asymptotic notation. Now there are three mainly asymptotic notations: theta notation, omega notation, and big O notation. Now let's take a look one by one on these three notation. अच्छा, इसमें किसी को भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर, then please clarify that. Okay, क्योंकि जो हम पूरे डा के अंदर जब भी किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करोगे आप लोग, हम डिजाइनिंग करेंगे, देन यही तीनों नोटेशंस वहाँ पे यूज में आएंगी. वैसे नॉर्मली वी विल फोकस ऑन ओनली द बिग ओ नोटेशन. ओके, so let's start. Big O notation or O notation, it is basically not O, it is a Greek symbol that is known as omicron. Okay, but in the reading we just read it like O. Big O notation, it is read like this: big O notation. So big O notation represents the upper bound of the running time of an algorithm. Thus it gives the worst case time complexity, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. ठीक है, अच्छा, पर कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम वर्स्ट केस में डिनोट कैसे करेंगे, हाउ? अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, पर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज द रिलेशन. अगर हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको और थोड़ा सा इजी वे में लिखता हूँ. ये रिवर्स फॉर्म में लिखा है. ओके, so Fn, or we can say the time requirement equal O of या order of G of n. जैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे हैं, अब इसको मैं एक्चुअल क्या होता है उस फॉर्म में लिखता हूँ. T of n इक्वल O of n स्क्वायर. इट इज लाइक दिस. ठीक है, तो Gn इज n स्क्वायर. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर फॉर अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम. बट ये कब होगा, इसके लिए कंडीशंस हैं. वी आर हैविंग सम कंस्ट्रेंट फॉर दिस पर्पस. इसके लिए है, तो दिस विल बी दिस, और वी कैन से दिस विल बी दिस. ठीक है, ये इसका एक्चुअल एग्जांपल है, ये टेक्निकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. तो दिस विल बी Fn विल बी ऑर्डर ऑफ Gn इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C and an integer n naught such that 0 less than equal Fn less than equal Cgn for all n greater than equal n naught. तो ये हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट हो, एक इंटीजर हो, और ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट. देन ओनली वी कैन से Fn इक्वल ऑर्डर ऑफ Gn. तो अगर हमको कोई दो फंक्शंस गिवन हो, एंड लेट सपोज वी आर गिवन लाइक दैट, लाइक प्रूव दिस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, लाइक it will be this. Or if we are, suppose we are given two functions, like suppose we are given a function Fn and we are given a function Gn, then the question will be like this: denote them in the big O notation.
तो बिग ओ नोटेशन में कैसे डिनोट होंगे, इस तरह से डिनोट होंगे, बट ये डिनोट हम कब कब कर पाएंगे, जब हमारी ये वाले कंस्ट्रेंट्स फुलफिल होंगे वहाँ पे, ठीक है। सो फॉर टू बी दिस there must exist a positive constant and an integer and not, and this condition must be satisfied, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी चेक कर लेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। So the above expression can be described as a function fn that belong to a set of OGN or order of Gn if there exists a positive constant c such that is lies between 0 and Cgn, मीन जो फंक्शन fn की वैल्यू है वो 0 और Cgn के मिड में लाई करेगी, ठीक है, फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, जिसके लिए हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट फंक्शंस फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएशंस आ जाए, पर जैसे आप इनपुट को इंक्रीज करते हो वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमको पता पड़ेगी कि वो फंक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास सपोज दो फंक्शन है, एक है सपोज एक है एन स्क्वायर और दूसरा है एन क्यूब, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल फॉर सम इनपुट लाइक फॉर एन इक्वल 1, इन दोनों की वैल्यू होगी 1 1, एन इक्वल 2 इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू होगी 8, देखो चेंज आ रहा है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ना भाई सेम फॉर स्मॉलर इनपुट दे आर बिहेविंग लाइक सेम, बट ऐसा नहीं है। वी विल चेक फॉर लार्जर वैल्यू, will plot a graph and then check that value. So for any value of n, the running time of an algorithm does not cross time provided by O of Gn, ये उससे बिलो ही होगा, किससे बिलो होगा, G of n से, और ये ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल मीनिंग क्या है, ओके। Now one more thing, since it gives the worst case running time of an algorithm, so it is widely used to analyze an algorithm, as we are always interested in the worst case scenario whenever we are doing the performance analysis, okay। Now let's come to this graph। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है fn, दूसरा फंक्शन है gn, एंड ये हमको देखना है कि इफ fn इक्वल ऑर्डर ऑफ gn, पर ये कब होगा, फॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ a positive constant c and an integer n naught if 0 less than equal fn less than equal cgn, it is c, okay, for n greater than equal n naught। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट मतलब वो n की सारी वैल्यू, मतलब एक तो n नॉट पे ये इक्वल हो सकता है और n नॉट के बाद वाली सारी वैल्यूज पर फंक्शन fn की वैल्यू gn से बिलो ही होगी। Now let's come to this graph. This is the input n. It is the order of growth. It is order of growth of two functions in the upward direction. Okay, now this is the plot for fn and this is the plot for gn, okay। So this is the point, it is the point n naught, okay। So this is the that in that particular value n naught, इसके बाद, अच्छा इससे पहले इस वाले पॉइंट पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। इस वाले पॉइंट के बाद फंक्शन fn की वैल्यू फंक्शन cgn से बिलो ही रहेगी। तो ये कंस्ट्रेंट्स अगर हमारे फुलफिल होते हैं, these constraints, then only we can say fn is related with the gn in this form, means fn is the order of gn, okay। So this is the big O notation। So any doubt to anybody in this big O notation? अगर ये क्लियर है तो आगे वाली दोनों नोटेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके, सो लेट्स कम टू, अच्छा ये क्लियर हुआ यहाँ पे। इट मीन्स इफ वी वांट टू डिनोट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी or the maximum time requirement or worst case scenario, then we will use the big O notation only, okay। now ये तो हो गया हमारा worst case का। now let's come to the another notation, omega notation। so assume
we want to represent the best case scenario of an algorithm in the case of time requirement, then we will use omega notation. Okay, so omega notation represents the lower bound of the running time of an algorithm. So basically what it do, so it provides the best case complexity of the algorithm. यहाँ भी सेम वही सिनेरियो है, बट अब मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके लिखता हूँ. एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन. हम यहाँ पे जो सिंबल यूज मिलेंगे दैट विल बी ओमेगा. ठीक है, सो एफ एन इज इक्वल ओमेगा ऑफ जी एन. वही सेम कंडीशंस हैं, बट यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो गई है. बिग ओ नोटेशन में द फंक्शन एफ एन वॉज लाइंग इन बिटवीन द 0 एंड सी जी एन, बट हियर द फंक्शन सी जी एन इज लाइंग इन बिटवीन द 0 एंड एफ एन. मतलब ये था, वहाँ पर तो एफ एन की वैल्यू उस सी जी एन के जो प्लॉट था उससे बिलो ही थी, पर यहाँ पर सी जी एन की वैल्यू इससे बिलो होगी. दोनों को मैं और सेपरेटली शो कर देता हूँ. फॉर बिग ओ नोटेशन एफ एन मस्ट बी लेस देन इक्वल सी जी एन, बट ओमेगा नोटेशन में उल्टा हो जाएगा, सी जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन. ओके, रिवर्स हो गया यहाँ पे. अच्छा, तो एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन if there exists a positive constant c, an integer n naught, and this inequality must be true. And if this inequality is true, then only we can say that fn is omega of gn. Okay, so the above expression can be described as a function fn that is belong to the set of omega gn if there exists a positive constant c such that it lies above cgn for sufficiently large value of n, for which values n greater than equal n naught. So for any value of n, the minimum time required by the algorithm is given by omega of gn, or the best case time requirements are can be denoted by this omega notation. Okay, now let's come to the plot graphical representation for omega notation. So it is same like that. I'm just writing here fn equal omega of gn if for okay, we can write if there exists a positive constant c and an integer n naught such that c gn, ये है सी जी एन, इट लाइज बिटवीन 0 एंड fn. ठीक है, ये अगर ट्रू है. अच्छा, फॉर किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, मीन n नॉट पर और उसके आगे वाली सारी वैल्यूज के लिए. इफ दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, देन ओनली वी कैन से fn equal omega of gn. So fn equal omega of gn. So this is the plot, and you can see here it is 0, it is input, and it is order of growth. ये different plots हैं. So it may be possible on n naught both values can be same, but after n naught the cgn will always below the function fn. और अगर ऐसा है, then we can represent any function in terms of omega notation that describe the best case time requirement of that function. Okay, तो ये हो गया हमारे पास बिग ओ नोटेशन का फॉर्मुलेशन और ओमेगा नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द थीटा नोटेशन. सो द थीटा नोटेशन basically encloses the function from above and below, means it will define the average case time requirement, since it represents the upper bound and the lower bound of the running time of an algorithm. So it is used for analyzing the average case complexity of the algorithm. इसमें भी सेम वही है, बट वी विल यूज दिस सिंबल, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे. एफ एन इक्वल थीटा ऑफ जी एन, सिंबल चेंज हुआ यहाँ पे.
for a positive constant c and integer n naught, यहाँ पर क्या होगा, नोट नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट सी, हमारे पास दो कांस्टेंट होंगे c1 एंड c2, तो फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट c1 एंड c2 एंड n नॉट, ये देखो इनइक्वालिटी हमारे पास इसकी है, fn will lie in between c1gn and c2gn. It is like this: 0 less than equal c1 gn less than equal fn less than equal c2 gn. It is like this for all n greater than equal n naught. तो अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है, फंक्शन fn की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है फॉर वेरी वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n, for these constants c1 c2 and an integer n naught, then we can say the fn is theta of gn. तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो this thing is representing the upper bound, sorry lower bound, and this thing is representing the upper bound. जहाँ पर fn की वैल्यू c1 gn से लेस है, that is the upper bound, और यहाँ पर greater है, that is the lower bound. So the above expression can be described as a function fn belongs to the set of theta gn. For what? If there exists positive constant c1 and c2 such that it can be sandwiched between c1 gn and c2 gn for sufficiently large n. If a function fn lies anywhere in between c1 gn and c2 gn for all n greater than equal n naught, then fn is said to be asymptotically tight bound. It will be tight bound. ये जो bounds हैं, these all are tight bound, big O notation, theta notation और omega notation. Okay, and this is the graphical pictorial representation for theta notation. Here you can see the here this is the value n. तो यहाँ पर it may be possible like the values of the function fn can be equal to c1gn or c2gn, but after this the value of fn will always below the will be in the middle of these two functions of c1gn and c2gn. तो इनके बीच में ही ये वैल्यू रहेगी. So basically it is representing the O notation and it is representing the omega notation, and this whole thing is representing the theta notation. Okay, so it is all about the asymptotic notation.